All right, ladies, welcome to Forever Star India and your official talent round 2. This is again, and another opportunity to shine and put your best foot forward. All the very, very best to everyone, and I'm sure you guys are going to do great. So give me a thumbs up if I'm properly audible and you're all set. Great. Please be very attentive to the sequence that I would be announcing, and if you have any personal recommendation for the sequence, you could type it in the chat box in a direct message to me. So now I would request the jury members to start their video so that we can finally start the process. Okay, there we have our 3 lovely ladies on the jury panel. The first, of course, is the director of Forever Star India, Ms. Kirti Chaudhary. Second, we have Smita Ghosh, who is a psychologist, healer, trainer, and a happiness coach, and is a very, very positive person to give you the right insights. And last but not the least, we have the Chaya Gotecha, who is a makeup artist and will give you the OG expert advice on your makeup skills. So welcome on board, ladies. Thank you so much. And if you guys give me a nod, I shall begin. Thank you. So the sequence to start would be Sana, Payal Yadav, Sakshi, Semantika, Deboshri. Hi, Sana. सना आप म्यूट पे, आपकी आवाज नहीं आ रही है सना, आप म्यूट पे हो. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Are you ready? Yeah. Go ahead. All the best. Thank you. So early good evening. I'm Sana. I'm 18 years old and I'm from Uttar Pradesh, Noida. So for today's talent round, I wanted to take something forward, which you guys have already seen from the previous rounds, which is my affinity for art. And because of that, I'm someone who's very connected to nature, and that has inspired my theme for today's makeup competition. So the theme I chose was the Enchanted Garden. So I have done my makeup inspired by the fairy Mariposa. As you can see, my eyeliner is in the form of her wings, and then I've adorned it with pearl crystals. The same goes for my accessories, which again represent butterflies, and my bracelets are adorned by seashells. Then the dress that I'm wearing, it's a pink floral dress, and I've styled it with like lace-up shoes, which basically represent vines, which are like entwined on your legs. Yeah, so that is the look which I really wanted to show you people today, and I hope it resonated with you. Thank you. Thank you, Sana. Thank you so much. I would request everyone to keep applauding for each other and appreciating each other digitally with all the smiles. I would request Kirti ma'am to comment upon your performance. Hi, Sana. How are you? I'm great. How are you, mom? Even I am good. You are looking so lovely. I cannot tell you. And the theme that you've chosen is absolutely amazing. And I love that how you've taken care of all the details, the dress that you're wearing. It's a floral, printed dress, the accessories, this tattoo. So is it a permanent tattoo? Yeah, it's a permanent tattoo. Okay, so it is also going with your theme, yeah? Yeah. All right, so that totally shows that you have chosen a theme which you actually believe in. And I just love that concept, because I always tell everyone that whatever you are portraying here, that should be something that you extremely are, proud of and you believe in it. है ना? तो आपको कुछ भी, pretend नहीं करना है. So I love that concept, Sana. One second, I could not. Okay. I thought I just got disconnected. So yes, overall, I just love your performance and all the best. Thank you. Thank you so much, Sana. And next we have Payal Yadav. Jury members, there are 2 Payals in this batch. So this one is Payal Yadav. Hi, Payal. Hello, ma'am. Good afternoon. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ. आप कैसे हो? बढ़िया. आप ready हैं? मैम, मैं पहले कुछ बोलना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले एक बार. बोलिए. मैम, मैंने कल परसों में मेकअप ट्राई किया था, तो मेरे फेस पे थोड़ी एलर्जी हो गई थी, तो मैंने फाउंडेशन वगैरह यूज नहीं किया, बाकी मैंने आई मेकअप और लिपस्टिक ही किया है. कोई बात नहीं, आप अपना शुरू कीजिए. ऑल द बेस्ट. गो अहेड. हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. मैं आज FCI का मेरा सेकंड टैलेंट राउंड है, एंड मैंने ये साड़ी वियर की है क्योंकि साड़ी अपने इंडियन
वुमेन्स, हर कोई लड़की या वुमेन एक बार तो अपनी लाइफ में जरूर पहनती है, या हर किसी को शौक होता है साड़ी अपन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं एंड न्यू फैशन के अकॉर्डिंग भी साड़ी को वियर कर सकते हैं। तो मैंने ये साड़ी वियर किया है एंड एक सिंपल मेकअप लुक किया है, क्योंकि मेकअप आई थिंक मेरे फेस पे सूट नहीं होता। तो थैंक यू मैम। Thank you, Payal. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. Hi, Payal. Definitely, you're looking very attractive. Makeup is not required. Whatever you have done, you're looking very pretty. Just be confident. Right? Even with a simple eyeliner, one can look really attractive. Thank you. The best makeup is your confidence. Right? So we just want to see that, and you're looking lovely. And best of luck for other rounds. Thank you, ma'am. Thank you, Payal. Thank you so much. Next, we have Sakshi. Hi, Sakshi. Ma'am, Yes. ma'am, I need just a few minutes, ma'am. Please किसी और का कर लीजिए. Okay, so we can hear it from Semantika next. Hi, Okay, Semantika. thank you, ma'am. Hi everyone. Hi ma'am, how are you doing? I am good. How are you? I'm doing good too. Thank you so much for asking. Okay, so shall I start? Yeah, go ahead. All the best. Thank you so much, ma'am. Okay, so hi everybody. This is Semantika Banerjee. I am 21 years old from Calcutta, West Bengal. And the theme today I chose for my outfit and makeup is what represents me. So first I would like to talk about my outfit. This is a custom made gown, which was inspired by Gigi Hadid's Jacquemus Ramp Walk. So as I mentioned in my interview earlier, Gigi Hadid was an inspiration to me when I wanted to start modeling. So this part of the look completely represents Gigi Hadid. And then goes for the makeup. I have included a face painting, which is the third eye of Durga Ma. So basically Durga Ma has 10 hands and she manages 10 things at once. I, on the other hand, have only 2 hands, but I have to manage multiple things. So I feel like the Durga Ma inside me manages all those things and helps me manage those things. So the third eye here, I used acrylic paint for creating the third eye. I have had my signature red lipstick. And for the base, I have, before prepping up, I have make sure that I put on some niacinamide so that my skin doesn't get oily, some primer so that my makeup stays. And for the hair, I chose for a simple bun because, as I mentioned, I work in corporate. So just to represent that part of me, I put my hair up in a bun. For my accessories, I kept it all simple. I used a gold and silver bracelet, some chunky neck piece, and a very simple ring. And for heels, I also wore, for the shoes, I wore strappy sandals. I'm not sure if you can see the sandals from here, but since the dress is strappy, I matched the theme with it. Thank you. Thank you, Semantika. Thank you so much. I would request Chaya to comment upon your performance. Hello. Hi, ma'am. Hi. You are beautiful. You are looking gorgeous, dear, and I Thank you love so your confidence. I really have doesn't any word. You speak very well as whatever you have done. You described it very nicely. And go ahead. All the best for the third round as well. I'm looking forward to see you, dear. Thank you, ma'am. Means a lot. Have a great day. Thank you, Semantika. Thank you so much. Harry, just to interrupt in between, this is for everyone, ladies. You have put in so much efforts. We want to see the complete look also. You know, when you show it in bits and pieces, it just does not make sense to me. Yes.
So what you can do is, you have time, those who haven't really appeared till now. Simantika, if you could also show us the complete look, because this customized gown, it's looking lovely, yes, but we could not see you as a whole till now. So for everyone, once you are done talking, once you're done explaining that why you have chosen this attire, why you've chosen this makeup, then you can just move a little further from your screen, your phone or your laptop, and then you can just show us your complete look, which includes your footwear also. Yes, so now you could keep your systems in such a manner. Thank you. Thank you so much, Simantika. Thank you. And I would request some of you to please change your usernames. I still can't figure out your names, so मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आपको allocate करना. Like there is a username say iPhone and RK, so it's getting difficult. So I would just ask you to edit your usernames and check them. Moving forward, we'll hear it from Devoshri. Hi, Devoshri. Hi. Devoshri, आप mute पे हो जी. Good afternoon, ma'am. Hello. जी Devoshri, hear you now. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Devoshri, अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, अब दे रहा है. जी, आप ready हैं? Yes, ma'am. Go ahead, all the best. Good afternoon, all of you. मैं देवश्री महाराष्ट्र से. मैंने दुर्गा देवी को रिप्रेजेंट किया है और मैं अपने थीम से ये बताना चाहती हूँ कि नारी अपने आप में खुद एक शक्ति का स्वरूप है. हम नारियों में लक्ष्मी, बुद्धि और शक्ति तीनों देवियों का संगम है. इसलिए हमें नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. बस खुद पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो. थैंक यू. Thank you so much. This is my complete look with Ms. Ma'am. Can you see me, ma'am? Hello? Yes, Devoshri, we can see you. This is my complete look, ma'am. Hello? Okay, thank you so much, Devoshri. Thank you. I would request ma'am to take over. Hi, Devoshri. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? Even I am good. I mean, you're looking so gorgeous and you're looking so fierce, just like Durga Devi. Yes, you're, so this is your natural hair, your black curly hair. No. This is extension, ma'am. I wear it. Okay. No, it's looking stunning. Your makeup, your hair that you've chosen, and your attire. So everything is on point. बस मैं थोड़ा सा और सुनना चाहती थी, दुर्गा देवी के बारे में, जब आपने दुर्गा माता के बारे में बात की, कैसे you are quite similar to दुर्गा देवी, वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगी. वो थोड़ा सा और आप उसके बारे में बात कर सकते थे. But if I just talk about your makeup and your expression, because you kind of maintained when you were talking in such a manner कि आप दुर्गा देवी ही हो. So I liked that. The overall act was really nice. All the best. Thank you so much. Thank you, Devoshri. Next, we can hear it from Jyotsna, and post her, the sequence would be Kritika, Anjani, Neena, Shreya, Ashley, and Ashley. Hi, Jyotsna. Jyotsna, आप mute पे हो. Yeah. Hi, ma'am. Are you ready? I'm audible. Yes, you're audible. I'm audible. Yeah, there's some construction work going on, so if it is not disturbing, then I can continue. I think manage keep your pitch a little higher then. Go all the best. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, my name is Jyotsna Tripathi. मैंने आज ये ट्रेडिशनल ड्रेस का थीम लिया हुआ है क्योंकि मैं अपनी भारतीय सभ्यता को जो है उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना चाहती हूँ. जैसे हमारी जो भारतीय सभ्यता, जो मैंने ये साड़ी वाला लुक लिया है, ये हमारी भारतीय सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है. अपने इंडियन जो हमारा ट्रेडिशन है
यूनिक है, सबसे ब्यूटीफुल है, तो मैं उसी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इस साड़ी के थ्रू। और मैंने ये ऑरेंज कलर की साड़ी ली है, जो ऑरेंज और रेड कलर में, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रही है। तो मैं मेकअप को मैंने लाइट ही रखा है मेनली, और इस हमारे बस इंडियन ट्रेडिशनल को मैंने साड़ी के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। थैंक यू। Thank you, Jyotsna. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. हेलो ज्योत्सना, आप सुन पा रहे हो आप? यस मैम। हाँ जी। Hello. आप हेलो। हाँ ज्योत्सना, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। कीप स्माइलिंग, और नेक्स्ट टाइम जब ऐसे आप साड़ी पहनो, थोड़ा सा बिंदिया बड़ा कीजिए और अच्छे लगोगे। ओके मैम। है ना? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बाकी के राउंड्स के। Thank you. Thank you. Next we have Kritika. Hi, Kritika. Hello, ma'am. A very good afternoon. Good afternoon. Are we ready? Yes, ma'am. I'm ready. Go ahead. All the best. Thank you, ma'am. A very good afternoon to one and all present here, my respected panel members and my fellow contestants. I'm Kritika SP from Bangalore. The very existence of true love, the very existence of human being is love. So today, the theme I have chosen is from the famous epic from Kalidasa's Abhignana Shakuntalam, and I have dressed up like Shakuntala, and this is the look. I have recreated this look. Yes. Yes, I have recreated this look, ma'am. The reason behind choosing this look was she's a very epitome of love. She has represented a love in her through Abhignana Shakuntalam. It has been represented a true love. I'm so sorry. Just a minute. It is a love between Dushyanta and Shakuntala. So in the current situation, what we are going through, be it in the pandemic or whatever, there is a need for true love, compassion, and being empathetic to each and everyone. So that is the reason I have chosen this Shakuntala role. Thank you, ma'am. Thank you, Kritika. Thank you so much. I would request Chaya to comment upon your performance. Hi Kritika, how are you, dear? I'm good, ma'am. Thank you. Yeah, you are looking really beautiful, and आपने जिस तरह से शकुंतला में अपने आप को प्रेजेंट किया है, वो बहुत ही परफेक्टली आपने एक एक चीज, फ्लावर्स, ये वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी एनहांस की है। मेकअप भी बहुत अच्छे से निभाया है, और या ऑल द बेस्ट फॉर द। थैंक यू डियर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Kritika. Thank you. Next we have Anjani. Hi, Anjani. Hi, ma'am. How are you? I'm fine. Okay, are we ready? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. Ram Ram Sa Kamagari to all. Good afternoon to all my honorable judges and all my fellow contestants. Today I choose this Rajasthani culture because I thought that Rajasthan is the cultural capital of India. It attracts many tourists from India as well as from outside. It never goes out of fashion. It shows simplicity in culture, due to which I have designed this lehenga with the meenakari work. I have tried to done a minimum eyeshadow makeup with black mascara and kajal. I have put foundation with blushes and heavy dark lipstick to coordinate with this lehenga and choli. As it is said that the rest part of Rajasthani heritage is its jewelries, due to which I have here this Mang Tika, which is important Rajasthani jewelries. I have also put Kaan Bali, which is also known as Solia, which would royal look to the Rajasthani ladies.
I have put Arg, which is the rectangular sheep necklace, which is called as Rajputana necklace. I have also put this Saumri, which is also known as bangle, which is usually worn by Rajasthani ladies bangle. So all these beautiful jewelries and makeup attracts me a lot to choose the Rajasthani culture. Thank you so much. Thank you, Anjali, so much. I would request you to come forward. Hi Anjani, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? Even I am good. Could you show me your complete look? Okay, okay. So this, you should have done this without me asking to do it, right? ये आपको खुद ही दिखाना चाहिए था. Look at the color of your lehenga. It's so pretty, orange. I just love this color that you're wearing. I just love the jewelry that you're wearing. But I wanted you to be more energetic when you were talking about it. You were just talking, hi, hi, hi. So, I wanted more of you into it, your feelings that yes, I'm wearing a Rajasthani attire and this is this. Because when you talk about something that you are passionate about, या कोई चीज आपको बहुत पसंद है, जैसे कि आज आपने राजस्थानी ड्रेस पहनी, आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज आप पहन के जब उसके बारे में बता रहे हो, so you have to put your energy into it. Yes. And when you put the right kind of energy into it, the person who's viewing it, even we are taken to that whole scenario. Even we start feeling it in the same manner. So next time, see, your overall act was fine. You are looking lovely, but I wanted it to be more energetic and you should have felt more passionate, right? So next time I'm looking forward to a much better and more energetic performance from your end, Anjali. Okay, all the best. Thank you so much. Thank you, Anjali. Next, we have Neena Jose, and post her, the sequence would be Shreya, Rameshri, Ashna, Sakshi, Ritu, and Nisha Nehra. Hi, Neena. Neena, if you could hear me, could you please start your video and audio? Okay, moving forward, we can hear it from Shreya then. Hi, Shreya. Hello, ma'am. A very warm good afternoon, everyone. Hi, myself. Yeah, go ahead. All the best. Yeah, myself Shreya Satpal. I'm from Maharashtra, Navi Mumbai. My look is inspired by a butterfly. As you can see, my eyes I have done with the eyeliner and a butterfly. As we all know, butterflies are unique and they have their own speciality. And they embrace it as like the humans should also embrace our own beauty and accept us without comparing others. So I have worn this pastel color top which includes a flower, also a skirt. As you can see, this top has a full shape neck hands, and I have worn heels. I won't be able to show it. I have also kept lipstick dark and have worn earrings. Yeah. Thank you, ma'am. I hope I will convey my message. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. Hi, Shreya. Hello, ma'am. Hi. Yeah. So definitely you're looking colorful, but definitely if your costume would have been more colorful and beautiful or something different or unique like a butterfly, that would have added some bonus means credits for you. But definitely you're looking nice. Your makeup is unique, something different. And definitely your top is also unique. But next time, as even I agree with Kirti, there has to be more energy when you speak, when you talk, or when you explain your getup. So good luck, and I know you will be unique in next round also. Thank you, ma'am. Thank you, Shreya. Thank you so much. Next, we have Rameshri. Hi, Rameshri. Hi, ma'am. Good evening, all. Good evening. Are we ready? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. Thank you. Hi, ladies.
My name is Ramya and I am from Bangalore. And accept yourself as you are, and the world will accept you. Yes, today's my topic is self-acceptance. Before that, I'm gonna do a mono acting. And firstly, let me just describe my makeup. This is a dark theme where it represents a dark woman, and this is a white skin tone where it represents a white and fair woman. I'll start. Hi. Hi. Why are you so sad? What happened? Actually, I'm worried about my skin tone because everyone are teasing me, but I want to become a model and I'm worried about this. Hey, don't worry. See, as the day is beautiful with the sunlight, but it doesn't mean that dark night sky has lost its appearance. But even night sky is more beautiful with the moon and stars. So you can enhance your beauty by the use of makeup, but accepting yourself as you are will be, you will look even more beautiful with that. So people are wasting their entire life to change from this color to this color, but they don't know the asset that have been given by the god, a beautiful asset, which is a smile. They can smile and look even more beautiful. So I would like to conclude this with saying, smile, you are beautiful as you are, so you need not change it. And today's look, I have wear this with which suits my dress. I will show. This is my dress. Thank you. Thank you, Ramya. Thank you so much. Jury members, Ramya was 40 seconds past her scheduled time, and I would request Chaya to comment upon her performance. Hello, Ramya. Hi, ma'am. Hi. एक्चुअली आपने जो आज का टॉपिक लिया है वो बहुत ही अच्छा है, लाइक क्योंकि काफी वुमेन्स, काफी लेडीज, काफी गर्ल्स यही चीज पे कहीं जगह पे अपना कॉन्फिडेंट लूज कर देती है कि मेरा कलर डार्क है तो मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, स्पेशली इन मॉडलिंग लाइफ. तो आपने बहुत अच्छे से निभाया and I'm looking forward to see you in the next round also. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, Ramya. Thank you so much. Next, we have Ashna, and post her to the sequence I'm re-emphasizing. It's Sakshi, Ritu, Nisha Nehra, Manisha, Neha Yadav, Mansi Kashyap. Hi, Ashna. Hello, ma'am. How are you? Am I audible? Yes, I'm good. How about you? I am good too. Are we ready? Yes, we are. Go ahead. All the best. Yeah, thank you. Good evening, respected judges, and good evening, all those beautiful ladies around. Well, the modern day relationship between women and makeup is actually rooted in history. It's chic, elegant, and flattering, but it's also so much more than that. I have worn a red and golden combination gown with a dark floral makeup because it's bold, defiant, undeniable, feminine, and visually powerful. The red rose, which is there on my cheek, symbolizes romance, love, beauty, and courage. A red rose, as it signifies beauty and purity. So I have worn this both on my cheek, and I have also took an accessory which also includes a rose. Thank you. And I would like to show my gown. Am I visible? Thank you. Thank you, Ashna. I would request you to comment upon your performance. Hi, Ashna. How are you?
I'm good, ma'am. How about you? Even I am good, and after seeing your, red attire, red makeup, I'm totally, taken to tomorrow. So tomorrow is Karwa Chauth, yes? Yes, tomorrow is Karwa Chauth. Yeah, so that is why everybody is going to be in red dresses, red makeup, and dark bold lipstick. So you're looking very bold, and I liked how you talked about it. Yeah, you said that it's feminine, it's bold. So your makeup is totally speaking what you are trying to portray here, right? Yeah. So, and your confidence, you have been confident in the first round also, and today also. When you were talking, you were so fully prepared with everything. See, your makeup is on point. What you wanted to speak, everything was well prepared, and you showed your complete look also to us. So all the best. You're going to go a long way, Ashna. Thank you. Thank you, Ashna. Next. Thank you, ma'am. Kirti, ma'am, I just want to tell you something. I'm so sorry. Actually, I'm trying to upload my pictures on my FSHIA profile, but I'm not able to upload them. I have tried multiple times. Can you give me a chance, like after this session, can I try once more? Yes, certainly you can. So the team is going to contact you, Ashna. Don't worry. The team will contact you, and on call, you can try uploading your pictures again. So if it cannot be done at your end, then you can share those pictures with the team, and the backend team will upload those. Okay, right? fine. So can I share them on WhatsApp? Yes, you can. Oh, thank you. Thank you. All right. Thank you, Ashna. Next, we have Sakshi. Hi, Sakshi. Hello. Good afternoon, ma'am, and to all the jury members. Are we This ready? is Sakshi here. Yeah, go ahead. All the best. Ma'am, so my today's look is one side I'm Durga, and on the other side the victim, the woman, the crimes against all the crimes that have been done against women. I'll show my makeup through one act. Shall I start? So, ma'am, my one side is all the crimes that have been done against the woman, and the other side is Durga Ma. This side represents the crimes that is done against the woman. सारे जो crimes होते हैं, that is dowry, rape, acid attack. Mainly, my main focus is on the acid attack and the rape that have been caused to the victims. लड़कियों को आज भी अच्छे से रहने नहीं दिया जाता है. आज भी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ये माना जाता है कि लड़कियां नहीं पैदा की जानी चाहिए, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. बट हम आज की नारी है जो सब पे भारी है. सो लड़कियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए. दुर्गा रूप इज देयर. दुर्गा माँ को शक्ति कहा जाता है हिंदू धर्म में. तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लड़कियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट आप मत करो. वुमेन कैन डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दे वांट टू डू इन देयर लाइफ. They can be as good as men are. Thank you so much. Thank you, Sakshi. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. Okay, thank you. Definitely, you're looking like a Shakti. Thank you so much, ma'am. अभी दुर्गा पूजा हुआ है. Yes, ma'am. And very well said. कि एक साइड पे तो हम दुर्गा माँ को पूछते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं को ये कर रहे हैं. बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया. आपका मेकअप भी बहुत अच्छा है और आपने जैसे एक्सप्लेन किया, दैट इज आल्सो वेरी नाइस. थैंक यू सो मच मैम. डेफिनेटली ये शक्ति आपको आगे तक लेके जाए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. होप द सेम. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Sakshi. Next we have Ritu. Hi, Ritu. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. How are you doing? I am good too, and looking forward to your performance today. Go ahead, all the best. Yeah, thank you, ma'am. Hello, friends. Hello, jury members. I am Ritu, and today I came up with one version of women empowerment. It's a robotic woman. We can say that 21st century woman is definitely a robo woman because we do many things and everything in our day-to-day life. And why I choose this costume
is a story. One day, my daughter, which is 6 years old, and she and me both are watching Shin-Chan. It's a cartoon animation movie, Shin-Chan and a Robo Dad. So after watching that movie, मेरी daughter मुझे कहने लगी कि मैम Shin-Chan के पास Robo Dad हैं and probably he do everything for him. But then I got a Robo Mom. So from there, I got an idea. Yes, we are a Robo Ma'am. We are playing with the kids. We are managing offices. We are managing family. We are just running and going and doing many things in our daily life. So from there, I got an idea. So now coming up to my costume, I have chosen vertical illusion skirt kind of thing. And then I grabbed the foils and you can see my headphone and everything I have made with the foil. And then my makeup, I have just given gold, green and silver look so that it can represent the boldness of the woman, which nowadays women carry, the confidence with the women carry. So this is how, and my shoes also, you can see they are armor shoes because now we are going and fighting. We are the fighters. We are fighting women. So we need armors also. So this is how I just created the look. This is what I am actually. Thank you so much. And now I also want to show a catwalk with this. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Ritu. Thank you so much. That was something I'm sure all the jury members agree. I would request Chaya to comment upon your performance. The only thing is, Ritu was 40 seconds faster schedule time. So, Chaya, if you could comment. Yes, right. आप इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से आपने डिजाइनिंग किया, ड्रेस एंड एवरीथिंग. The speech is lovely, everything is so on point. But आपको थोड़ा करना भी माइनस पॉइंट्स को टाइम की इशू से मिल जाते हैं. So next time आप वो केयर कीजिए. Overall, you are beautifully done your impact. Yeah, I know that you will. See you in the next round with the same energetic and same some different topics. Yes. Thank you, ma'am. I will. Thank you, Ritu. Thank you so much. Next, we have Nisha Nehra. Hi, Nisha. Hello. Hello, everyone. Hi. Hi, ma'am. How are you, Nisha? I'm fine. Ma'am, how are you? I am good too. Are we ready? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. I am Nisha Nehra and I am dressed up as a Gujarati woman. And मैंने गुजरात में कुछ दिनों पहले मैं गुजरात में टूर के लिए गई थी, तो वहां से मैंने गुजराती घाघरा चोली खरीदा और आज मैं गुजराती वुमेन की तरह ही ड्रेस्ड अप हुई हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने गुजराती घाघरा चोली और चुन्नी और उसकी गुजराती ज्वेलरी पहनी है और गुजराती जूती और जूड़ा बनाया हुआ है. And that's it. Thank you, Nisha. I would request अगर आप चाहें तो आप खड़े होकर अपनी आउटफिट दिखा. Okay. Ma'am, I am visible? Yes, you're visible. Thank you, Nisha. Thank you so much. I would request. Thanks, ma'am. Hi Nisha, कैसे हो? मैम गुड. गुड नहीं लग रहे हो आप, मुझे बहुत नर्वस लग रहे हो जब से आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट की है. ऐसा क्यों? मैम आई डोंट नो. आई डोंट नो नहीं, आप लास्ट टाइम भी आप नर्वस थे. मैंने आपको बोला था कि किसी चीज से आपको नर्वस कब होते हैं? जब हमें डर लगता है कि हम कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे, क्या मैं अच्छे से बोल रही हूँ, क्या मेरा मेकअप अच्छा है, क्या मेरी ड्रेस लग रही है.
So first thing, take a deep breath when you are appearing for anything. आप next round में जब आएंगे तो एक लंबी सांस आपको लेनी है और ये सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है यहाँ पे, राइट? और मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ, मैंने सब कुछ, मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा है, राइट? सो बी वेरी पॉजिटिव बिफोर एवरी परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप हल्के से भी नेगेटिव हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो जो आप बोलना चाहते हो या जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हो वो हो ही नहीं पाता, राइट? सो यू लुकिंग लवली, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप इतने एप्रीहेंसिव हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है? और आपका जो ये एंगल है ये भी आपको सही लेना है निशा, जो आपका आई लेवल है उस लेवल पे आपका कैमरा होना चाहिए। यस, जैसे मेरा है, आप देखिए ऐसे लग रहा है ना कि मैं आपसे बिल्कुल, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो जो आपका एंगल है कैमरा का वो बिल्कुल गलत है, लाइट आपके पीछे आ रही है, लाइट आपके ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट? तभी आप मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखोगे, आपका ये जो मेकअप आपने इतना टाइम लगा के किया है वो बिल्कुल क्लियर मुझे दिखेगा जब लाइट आपके ऑपोजिट होगी, ठीक है? नीचे आप कुछ रख सकते हो, यू कैन कीप अ फ्यू बुक्स या कोई बैग आप नीचे रख सकते हो, तो वो लेवल अपने आप ऊपर हो जाएगा, ठीक है? सो या राइट, इसको थोड़ा सा और आप इम्प्रूव करोगे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो सारी चीजों का ध्यान रखना है निशा, क्योंकि आप अभी मेरे सामने इन पर्सन नहीं हो, आप वर्चुअली हो, तो जैसा आप मुझे वर्चुअली दिखाओगे, जिस एंगल से दिखाओगे मैं उसी एंगल से देखूंगी और उसी अकॉर्डिंग आपको स्कोर दूंगी। सो कीप इन माइंड कि वर्चुअल प्रेजेंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है, किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना, यू आर द बेस्ट जस्ट द वे यू आर, ओके? ऑल द बेस्ट। ओके मैम। Thank you, Nisha. Next, we have Manisha. Hi, Manisha. Hello, ma'am. How are you? I'm good. How? 1 minute, ma'am. Hi, ma'am. Yeah, are we ready? Yes, ma'am. Go ahead. Shall I show this attire? I have dressed up this as a Garhwali culture of Uttarakhand. This is the skirt which we generally wore there, and this we called as our Angra. And this which I wore is this Pichoda. And the main point of this attraction of our Garhwal beauty is this. I have wore this Gulpan, and this we called as our Garhwali nuts. This is our traditional culture. They show that generally why we wear this kind of dress in Pahari, because as we know that in Garhwal there's a winter, mostly climate is winter. So to make our body warm, and for this we attire this. And it is also well known, famous, that this Garhwali, this nuts which I wore is big in size, as in other state or other cities. Generally nuts are small, and this which I wore is Gulban. This is of cold one. This is kind of band we can say, and this is made up of gold plated. And this Pichoda is also, this lining is made up of gold plated. And so for that I want to sing a song from my Garhwali culture. मेरू पहाड़ा मेरू मैं, मेरू पहाड़ा कल कल कर दी चौका गीता, नदियाँ छाया कुगती घुराने लगी, नदियाँ छाया कुगती घुराने लगी, कल कल करती थी बारिशा, मेरू मैं तो मेरू पहाड़ा। ये जो सॉन्ग मैंने गाया इसका मतलब है मेरू मैट, मैट मतलब मेरा जो मायका है और मेरा पहाड़ वो इतना खूबसूरत है कि वहाँ गाड़, गाड़ का मतलब होता है जहाँ पानी का एक गदेरा होता है, वहां से पानी का नेचुरल सोर्स, मतलब ये पूरा नेचुरल ब्यूटी शो करता है गढ़वाल की। और घुघुती हमारे यहाँ जब भी कुछ अच्छा अवसर होता है तो वहां पर वो घुघुती एक चिड़िया है,
वो कल कल उसकी आवाज से पूरा महक जाता है पूरा हमारा वातावरण। तो ये हमारे यहाँ जब लड़की की शादी होती है, कुछ होता है, तो अच्छे फंक्शंस पे ऐसे गाने हमारे गढ़वाली में गाए जाते हैं। Thank you, Manisha. Thank you so much. Jury members, Manisha was 1 minute 10 seconds past her scheduled time, and I would request Smita to comment upon your performance. Hello, Manisha. Hello, ma'am. आप बहुत अच्छे लग रहे हो, स्पेशली आपकी वो नथ, इट्स रियली सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। और आपने अपने गढ़वाल को जिस तरह से प्रेजेंट किया, आपने आपके कॉस्ट्यूम से, आपके मेकअप, ज्वेलरी से, इनफैक्ट इवन आपके गाने से, तो हम लोग के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव था। इट वाज वेरी नाइस, बट ये एक कंपटीशन है। यहाँ पे यू हैव टू रेस्पेक्ट द टाइम, राइट? आप पहले से थोड़ा सा रिहर्स कीजिए, थोड़ा सा टाइम में लिमिट में करके। बोलने के लिए काफी कुछ है, लेकिन उस समय में कितना हम कैसे बता सकते हैं, दैट इज द मेन कंपटीशन, राइट? सो नेक्स्ट टाइम या प्लीज इसका देखिएगा, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। Ma'am, I have not uploaded. Sorry, ma'am, I have not uploaded any photos right now. I can upload it at FSIA. Yes, yeah. Harry will help you out with that. Okay, sure, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Manisha. Next, we have Neha Yadav. Post her, the sequence would be Mansi, Shashmita, Madhuri, Shilpa, Neena. Hi, Neha. Hello, ma'am. How are you? I am good. Jury members, there are 2 Nehas in this batch. This one is Neha Yadav. So, Neha, are we ready? Yes. Go ahead. All the best. Thank you. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Neha Yadav, and I'm from Etawah, Uttar Pradesh. Today, I'm representing Queen of Hearts. I choose this this role model as my, I choose this icon as my role model because it's very close to my heart, and I always want to be a Queen of Hearts. So this is it, Queen of Hearts. The Queen of Hearts in the cards really, represents idealism, magnetism, affection, and power. And the Queen of Hearts basically represent, and it symbolizes the much loved mother, indispensable sister, adored daughter. These eyes I have done, and little bit of heart I have made, try to make this character a more really beautiful. And these are the earrings which I made from sheets, and this is the card collar, which I tried to make this, icon more realistic. So this is my full look. I'm going to show you. That's all, ma'am, from my side. Thank you, Neha. Thank you so much. Jury members, Neha was 10 seconds past her scheduled time, and I would request Chaya to comment upon her performance. Hello, Neha. Makeup भी बहुत अच्छी तरीके से किया है. The theme is good. अभी present किया हुआ Ma'am, you are not audible. This is makeup. Chaya, I think आपका network बहुत weak है, आपकी आवाज बहुत break हो रही है. So I think Kirti ma'am, if you could take. Hi Neha, how are you? Okay, even do I have a network problem? Am I audible? Neha mute पे चली गई हैं.
Okay, okay, no problem, no problem. नेहा, आप बस मेरी बात सुन लो, वो भी मेरे लिए बहुत है. I love the creativity that you've shown. You know, the way you were sitting and the way you stood up, and you know, you were showing this whole attire. So I love the concept that you've chosen. You know, totally looked like this queen from the cards, and you know, you've just come alive from that card. So this collar that you've made with the cards, it's amazing. I love this creativity, and your crown, your dress, everything is amazing. Just that when you were talking about it, thoda sa aur hum maze se agar baat karte, because the role that you've chosen is amazing. आप इसको बहुत ही interesting तरीके से बता सकते थे, right? So the setup, your attire, your makeup, 100 on 100. But when you were talking about it, मुझे लगा 50-50. आप थोड़ा सा 50% और उसमें effort डालते तो ये जो आपका act था, ये आज का best act हो जाता. Yes? But all the best. You're looking lovely. Thank you, Neha. Thank you so much. And next we have Mansi Kashyap. Hi, Mansi. Hi there. How are you? I am good. How are you? Hi there. बहुत फीवर हो रहा है. कोई बात नहीं, आप परफॉर्म कीजिए. All the best. Go ahead. मैंने डुअल लुक किया है. कल सुबह छोटे तो मुझे फीवर हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं. तो मैंने रेड कलर के सूट के साथ में रेड कलर का चूड़ा पहना है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया. आई शेडो, मस्कारा, हेयर पाउडर और लाइव दैट करके लिपस्टिक, नेल पेंट, मैचिंग कई. Thank you, Mansi. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. हेलो मानसी. हेलो मैम. बुखार के बावजूद आप इतना अच्छा आज किया है. डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि आज आप तबीयत ठीक नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए, बट डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में वी विल होप कि आप और थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके और एनर्जी के साथ आए. Thank you so much, Mansi. Next we have Sashmita. Hi, Sashmita. Good afternoon, everybody. I'm Sashmita as a bride look. Walking down the aisle in hand a beautiful garland. There she goes, leading a new journey of her life as a beautiful bride. Radiant, glamorous, elegant, stunning, and vivacious. These words are perfect for a beautiful bride. Nowadays, brides are really super and wow. They look super gorgeous with the makeup and the up-to-date makeup. As I was born in a middle-class family, those days, I mean down the line 11 years back, we were not having such huge range of makeup. I thank FSIA for giving me an opportunity to showcase my dream come true look. And to get this look, I have started this look with a moisturizer, followed up with a primer, then a little bit of concealer, and then foundation, going on with a blush and highlighter. And for my eyes, I have used Lakme Absolute Kajal, liner, and eyeshadow with bangles in both hands and jewelry. Thank you so much. Thank you so much, Sashmita. Sashmita, मुझे ये बताइए कि आप सश्मिता त्रिपाठी हैं. Are you from batch S only? Yes, Sashmita Tripathi from batch S. Okay. Thank you so much. And I would request Chaya, if she is connected again, to comment upon your performance. Hi, थोड़ा this time the network issue हो रहा है. So if it is possible, okay, are you here right now? There is a network issue, so just ask. Okay, Chaya. You can forward to Kirti ma'am. Yeah. Okay, no issues, Chaya. Thank you so much for the clarity. I would request Kirti ma'am to take over.
Please, thank you. Good. Hi, Sashmita. I'm so sorry. I got a little occupied somewhere. So let me just tell you, you're looking gorgeous in that color. Your jewelry, I just love your jewelry. I love this color that you've chosen and this leheria dupatta. It's looking absolutely stunning on you. And जो आप message देना चाहते थे, that was also pretty much clear to me. But I would suggest from next time when you're talking about something, it should come from your heart, right? Do not learn it, and when you learn it, आप फिर जब उसको बोलते हो तो आपको सोच के बोलना पड़ता है. You think and then you speak. आप किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए, आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, but say whatever is coming straight from your heart. Yes, because I know the theme that you've chosen, you have chosen it, and you totally go by what you were saying. But I just felt this one thing that you kind of learned it, and when you were trying to say it, तो आप भूल रहे थे बीच में. तो उससे क्या होता है, वो परफॉर्मेंस का जो एनर्जी है ना, वो बीच में ब्रेक होता रहता है. Right, but otherwise you're looking gorgeous, and all the best for your next round. Thank you, ma'am. Thank you, Sashmita. Thank you. Next we have Madhuri. Hi, Madhuri. Hello, ma'am. I am audible. Yes, you're audible. Are we ready? Yes. Go ahead. All the best. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम माधुरी माधुरी, है. आपका वीडियो ऑफ है. आप वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज. Yeah, now it's visible, so you can go ahead. All the best. ओके. नमस्ते, मेरा नाम माधुरी गोरे है और मुझे ना डिफरेंट टाइप का मतलब लुक क्रिएट करने का बहुत शौक है. तो मैंने आज जो थीम चूज की है वो है इंडो वेस्टर्न. तो इंडो वेस्टर्न मतलब क्या होता है कि एक और दो फैशन मिलके जो फ्यूजन क्रिएट होता है उसको हम इंडो वेस्टर्न बोलते हैं. तो इस इंडो वेस्टर्न लुक में मैंने गुजराती और नॉर्मल कॉलेज जींस भी वेयर की है. तो ये एक फ्यूजन है, फन लविंग. तो आई लव टू एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट स्टाइल और also the look. मैंने नॉर्मल सी साड़ी ली है और इसको गुजराती लुक जैसा ड्रॉप किया है और ये बंजारा टाइप जैसा ये यहाँ पे इसको सेट किया है और ये मैंने चौकर नेकलेस पहना है और ये सिंपल सी मेरी इयररिंग है और मैंने ना मिनिमल सा मेकअप मैंने अप्लाई किया है चेहरे पर और इसमें ओनली नॉर्मल सी हेयर स्टाइल की हुई है और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई हुई है, बस इतना ही किया है और ये मेरा लुक रेडी. थैंक यू. Thank you. Thank you, Madhuri. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. Hello, Madhuri. Yeah, hello, ma'am. डेफिनेटली बहुत ही फ्यूजन वाला ड्रेस है आपका कॉस्ट्यूम. वेरी इंटरेस्टिंग कि जीन्स के साथ आपने साड़ी ट्राई किया है. बहुत एक्सपेरिमेंट किया है ड्रेस में. अगर आपने मेकअप पे भी थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया होता तो और ज्यादा उस पे यूनिक क्वालिटी आ जाती. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग, ट्राई टू ऐड दैट पार्ट आल्सो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट राउंड. Thank you so much, Madhuri. Next we have Shilpa. Hi, Shilpa. Hello, ma'am. How are you? Fine, ma'am. Okay, are we ready? Ready, ma'am. Go ahead. All the best. अच्छा, okay, thank you, ma'am. पहले मैं अपना लुक बताऊंगी. मैंने गुजराती साड़ी पहनी है. अच्छा, मैंने मेकअप में फाउंडेशन या ऐसा कुछ नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे पिंपल्स हो जाते हैं उसकी वजह से. तो मैंने सिर्फ लिपस्टिक की है, काजल किया है, आईब्रो पेंसिल की है और बिंदी की है. और ऑर्नामेंट्स में मैंने इसके मैचिंग बैंगल्स है, रिंग है और झुमका, ये सब पहना है और गुजरात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. और मैंने आज गुजराती पटोला पहना है जो यहाँ का मीन्स पूरी दुनिया में फेमस है. और साड़ी से मैं सोचती हूँ कि कोई भी वुमन
एलिगेंस, गॉर्जियस और स्टाइलिश लगती है। और गुजरात के बारे में मैं एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहूंगी। मैं कर सकती हूँ मैम? 2 लाइन? ओके। ए काची केरी ने अंगूर काला, काची केरी ने अंगूर काला, अमे गुजराती लहरी लाला, अमे गुजराती लहरी लाला। गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गुजराती की बोलबाला, हम लहरी लाला, हम लहरी लाला। थैंक यू मैम। Thank you, Shilpa. Thank you so much for entertaining everyone. And I would request Kirti ma'am to come. Thank you so much. हाय शिल्पा, कैसे हो? ठीक है मैम, आप बताइए। नहीं, आप ठीक नहीं हो, आप बहुत बढ़िया हो, आपने बिल्कुल एनर्जी ही चेंज कर दी। हाँ, आज के टैलेंट राउंड में Thank you. शिल्पा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस एंड देयर इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी दैट यू हैव। आपने ये जो साड़ी पहना है गुजराती स्टाइल में और आपका जो बैकग्राउंड है, तो दोनों बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो रखे हैं, दोनों कलर्स। तो आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ, ठीक है। एंड मुझे अच्छा लगा कि जो आप बिलीव करते हो आपने वही चीज बोली, ठीक है। और दूसरा ये जो आपने गाना गाया कि सब तरफ गुजरात ही गुजरात है, तो बिल्कुल आपने सही बोला। जब आप जैसे पार्टिसिपेंट्स होंगे फॉरएवर मिसेस इंडिया में, तो सब जगह गुजरात ही गुजरात होगा। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you. Next we have Nina. Post her, the sequence would be Ankita Burman, Anuradha Tiwari, Disha Mohanty, Yashi, Kajal, Meghna Sharma, Pardeep Kaur Kalsi. Hi Nina. Hi ma'am. How are you? I'm fine ma'am. Okay, go ahead. All the best. Okay, thank you ma'am. Today, hi, good evening. Today I'm wearing this is Kerala's culture, and this is a here we called set sari, and this is a simple look, and we just had some kajal and lipstick, and then we called chandana, and same color of bangles. That's it. It's a simple makeup. I will show you the final look. Okay. Thank you, Nina. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. Hi, Nina. Hi, ma'am. You have chosen such a beautiful place, Kerala. And Kerala sari. yes, You could have added so many other things also in your introduction. Right? So next time, try to include a lot of things which sure. है ना, अपने बारे में भी talk about little bit about you also, why you have chosen this, what was the reason for choosing this, right? And more confidence when you speak. Okay, okay, ma'am. Next time I will. Yes, and best of luck for your next round. Thank you so much. Thank you, Nina. Thank you so much. Next, we have Ankita Burman. Hi, Ankita. Hello, I'm ready. Okay, go ahead. All the best. Hello, good evening, everyone. Here are my talents, which are fun. I rhymed on purpose because I am a poet. I write short stories, sharp as a bullet. I love reading them out, which you will hear about. I am Ankita at 20 from West Bengal. My free times pass on baking and painting. I'm a very dramatic anchor and a passionate singer. I can rap as well. I did a cute thing to look at. Look at my eyes and the color black. Oh, my rosy cheeks, dark maroon bash on my lips. My hair tied up as a queen's backpack. My black dress, elegant work alack. I chose it for it, hug me right. To present myself on screen bright. These puffed up sleeves are nobly right. My themes are my confidence, my talents, my boldness, and my smile. Because there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are.
And you don't have to change a thing, the world could change its heart. We're stars and we're beautiful. We're stars and we're beautiful. A short note, all my equipments, paintings, and achievements are at home right now. So I had to produce the possible printouts of them. And the bottom line of my performance that I followed is look good and feel good, #FCA. Thank you, and I will present my whole look. This is my black bowl outfit and with heels. Thank you. Thank you, Ankita. Thank you so much. I would request Kirti ma'am to comment upon your performance. Hi, Ankita. How are you? I'm great, a little in fever. How are you? Oh, okay. Doesn't seem that you have fever. The way you've given your performance, you just look perfectly fine to me right now. Yeah, so that's what something that you're passionate about, and when you perform it in front of the audience does to you. Yeah, you've kind of inculcated everything into this one performance. Your poetry, through your poetry, you kind of explained your makeup, the makeup that you've done. Yes. And when you sang towards the end, absolutely, you're an absolutely amazing singer, Ankita. And for me, your performance was flawless. So all the best for your final round. Thank you so much. Thank you, Ankita. Thank you so much. Next, we have Anu Tiwari, Anuradha Tiwari. Hi, Anu. Hi, ma'am. Hi, are you ready? Yes, ma'am. Go ahead, all the best. My theme is Punjabi. That's hearing and ring. Punjabi looks लिया है मैंने. I'm done. Thank you, Anuradha. I would request Smita to comment upon your performance. Anuradha. Yes, ma'am. Where is the Josh? Ma'am, I think neck में tonsils हैं. Okay. So maybe next time हम आपका जोश भी देख पाएंगे. यार पंजाबी को represent कर रहे हो. There has to be little bit more. Yes, ma'am. Right? थोड़ा सा और अपने आप के बताइए आपके बारे में. नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा अगर आपकी तबीयत ठीक रहे, सो यू नीड टू स्पीक. थोड़ा सा आप बोलिए आपने ये क्यों चूज किया है. नॉन मैम, मैंने पंजाबी लुक इसलिए लिया है क्योंकि लड़कियों को पंजाबी लुक ज्यादा पसंद आता है. आई थिंक लड़कियों को पटाखा भी बोलते हैं, इसलिए मुझे लगा कि पंजाबी लुक लेना चाहिए. दैट इज चोटी, मतलब खजूरी चोटी, एंड इयररिंग्स एंड रिंग्स. डेफिनेटली लड़कियों को पटाखा बोलते हैं. थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो आपको भी पटाखा बोलेंगे फिर. ठीक है. Good luck. Thank you, Anu. Thank you so much. Next, we have Disha Mohanty, but I guess she got disconnected. So we can move forward to Yashi, and then it will be Kajal Prasad, Meghna Sharma, Pardeep Kaur Kalsi, Aarti, Payal Jaiswal, Prabhati Das. Hi, Yashi. Hello. How are you? I'm fine as wine. How are you? I am good. And are we ready? Yes. Go ahead, all the best. ओके. माना कि पुरुष बलशाली हैं, माना कि पुरुष बलशाली हैं, लेकिन जीतती हमेशा नारी है. सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है. I want to thank FCR for creating this beautiful platform and celebrating the womanhood. My today's theme is Dr. the Bride, and I'm going to showcase what she has earned and what she has bought. The lehenga she is wearing was bought by her, but the coat she is wearing was earned. The jhumka she is wearing was bought by her, but the tattoo on her neck was bought by her.
So hello everybody, this is Dr. Yashi with Stato on the neck is all here to earn the crown on our head. Well, my today's theme is a doctor the bride. So I'm going to do a small Bharati dance for all of you, and I want all of you to join in my Bharati dance. ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ गणपत बजाना काय को बंद किया I guess time is over. Thank you so much. I am from Gujarat, that's why they like Kodi Gujaratni. Thank you. And do you remember Yashi was 35 seconds past the scheduled time, and I would request Kirti ma'am to comment upon your performance. Hi doctor, how are you? I am fine as wine. How are you? Even I am good, and your positivity is contagious, Yashi. I'm sure everyone wanted to dance when you were dancing on this number, and I just love the energy because again, for me, it's extremely important that what is the kind of energy that you're portraying here on the platform, because there are so many people who are looking up to you and who are going to be inspired from you. So certainly your energy is amazing. And, you portrayed, you are yourself a doctor, and you talked about being a doctor. So I totally doubt that your performance was good. But from next time, please be more prepared. Keep a track of your time. Yes, you exceeded your time. So that shouldn't be happening in the further rounds. Okay. Yeah. All the best. All right. Thank you so much. Thank you so much. Next, we have Kajal Prasad. Hi, Kajal. Hi, ma'am. How are you? Yes, ma'am. I'm fine. How are you, ma'am? I am good too. You can go ahead. All the best. So, ma'am, आज मैं सावित्रीबाई फुले बनी हूँ, ज्योतिबा फुले की पत्नी। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हम औरतों को शिक्षा के लिए एक राह दिखाई, नहीं तो वो नहीं होती तो आज शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। और उनकी वजह से आज महिलाएं पढ़ पा रही है, आगे बढ़ पा रही है। तो इसलिए मैंने उनका ये लुक लिया है, क्योंकि स्पेशली मुझे उनका ये लुक बहुत पसंद है। सिंपल है बट पावरफुल है। सो मैंने एक कुमकुम का ये सिंदूर लगाया है, और ये एक सिंपल माला है बूटे, और मैंने आंबोड़ा किया हुआ है, और ये मेरी साड़ी है। Thank you, ma'am. Thank you, Kajal. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. काजल, बहुत अच्छा किया आपने, और आप जो सावित्री भाई बने हैं वैसे ही आपने आपको प्रेजेंट भी किया। डेफिनेटली सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, और उनके वजह से ही शायद आज इतने फीमेल्स आगे आ पा रहे हैं, एजुकेशन ये हो पा रहा है। सो वेरी वेल सेड, and good luck for your next round. Thank you, ma'am. Thank you, Smita. Thank you so much, and thank you, Kajal. Next, we have Meghna Sharma. Hi, Meghna. Hello, ma'am. I'm audible. Yes, you're audible, but आपका video off है. Yeah, ma'am. Just give me 1 second.
चित्तौड़ के आंगन में फिर से एक नई लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी होगी और ना सुनी होगी। जिस अग्नि को साक्षी मान के हमने साथ जीने और मरने की वचन लिए थे, उसी अग्नि को साक्षी मान के आज हम खुद को सौंप देंगे। आज हम सारी शतरानियां मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने वाली लालसा रखने वाले शत्रु को हमारा शरीर तो क्या हमारी परछाई तक हाथ नहीं लगेगी और हमारा शरीर जल के राख हो जाएगा, लेकिन अमर रहेगी राजपूती शान, राजपूती आन। खम्मा गनी all. A very good afternoon to all the jury members and the all my co-contestants. I am Meghna Sharma and I am currently living in a Jaipur city. And today I have the look of Padmavati. आज मैंने पद्मावती का लुक लिया है क्योंकि मैं इससे बहुत इंस्पायर हूँ एंड मुझे हिस्टोरिकल चीजें करना यानी कि हिस्टोरिकल एक्ट लेना बहुत ज्यादा पसंद है। आज मैंने पद्मावती का लुक लिया क्योंकि बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजों में अपन देखें तो ये एक्ट बहुत ज्यादा चलता हुआ आ रहा है, ये कल्चर बहुत लोग अपना रहे हैं। तो मैंने आज क्यों ना चाहा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर के मैं उसी चीज का लुक लूं। सो आज मैंने पद्मावती का लुक लिया एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। खम्मा गनी। Thank you so much, Meghna. I would request Kirti ma'am to comment upon your. Hi, Meghna. Hello, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. Yes, you're looking lovely. आपने जो ये राजपूती पोशाक पहनी है, you're just wearing it in the most perfect manner और आपने इसको carry भी बहुत अच्छे से किया है. The way you're holding it with your left hand, you're just looking lovely. And as said by you that you've always been interested in history and this was a very important historical event. जो जौहर की आपने बात की, वो एक बहुत ही important historical event था राजपूतों के लिए, आज भी है. Yes, ma'am. That's why I'm representing the Rajputi culture also. Right, right. So very beautifully you portrayed the whole act. बहुत ही अच्छा लगा मुझे act भी, and when you were talking about it, it kind of felt that yes, you know, did not really learn it, but yes, you have actually been following the Rajput culture. So Meghna, all the best. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, one request I would like, मतलब मुझे कुछ कहना है. जी please go मुझे ahead. एक स्क्रीनशॉट लेना है मैम आपके साथ में. मैं पोस्ट कर सकती हूँ स्टोरी पे. Yes, ma'am. Please go ahead. Thank you so much, ma'am. Khamma gani all of you. Khamma gani, Meghna. Khamma gani. Thank you, Meghna. Thank you so much. Next we have Pardeep Kaur Kalsi. Hi, Pardeep. Hello, ma'am. How are you? Good evening, everyone. How are you? I'm also fine, thank you. Okay, go ahead. All the best. So firstly, I will perform, then I'll start my speaking performance. It will be followed. Okay. हाय मैं पंजाबन जट्टी मेरा डुल पैंदा रंग मैनू मान पंजाबन होण ते मेरा नचे अंग अंग. So hi everyone, this is Pardeep Kaur Kalsi and I'm representing my Punjabi look and which is also for the Karwa Chauth as well. I have I'm representing a woman which is having tomorrow Karwa Chauth. So I have worn jewelry and the makeup I also have applied. I want to show as well as it was instructed us. So I have applied this foundation, concealer, eyeshadows, and with these brushes I have done all these things. And I believe that women should have prepared for everything. So I also have tried to prepare with everything. So this is it. And about my look, I have worn this. Thank you.
Thank you, Pardeep. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your. Definitely, Pardeep, this is the spirit of Punjab. So आपने आज वो दिखा दिया पंजाबी कुड़ी. So best of I luck. have tried, ma'am. Yes, बहुत अच्छा है आपका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है. This is a Yes. typical. Yes, जो this is शायद called इसका कुछ एक नाम. फुलकारी. हाँ हाँ फुलकारी बहुत फेमस है वहाँ की. Yes, And, ma'am. Punjab ki this is famous. So बहुत अच्छे से आपने explain किया. Thank Good you luck so for much, ma'am. your further rounds also. Thank you so much, ma'am. Thank you, Pardeep. Next we have Aarti. Hi, Aarti. Thank you so much. I was on mute. I forget. हेलो मैम. आरती, आपका पूरा नाम जान सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, मेरा पूरा नाम आरती लवलॉक है. ओके, आप कौन से बैच से? मैं आर बैच. ओके आरती, गो अहेड. ऑल द बेस्ट. सभी को मेरी तरफ से नमस्कार तहे दिल से. आप बढ़िया हो सब? मैं भी बढ़िया. 1 सेकेंड. मैंने आज ब्यूटीफुल इंडियन नारी को रिप्रेजेंट करा है और आज मैंने येलो साड़ी पहनी है, येलो एंड रेड. आपको आवाज आ रही है? येलो एंड रेड साड़ी वेयर करी है क्योंकि इंडियन नारी ज्यादा ब्यूटीफुल साड़ी में ही लगती है. और मेकअप मैंने प्राइमर, फाउंडेशन, मैंने ब्लश करा रेड, रोज रेड, और मैंने गोल्डन आईज करी है, मस्कारा, लाइनर, फेस कट दिया है और आईब्रो, और मैंने रेड बिंदी लगाई है. ब्यूटीफुल नारी रेड बिंदी ज्यादा लगाती है. और मैंने ये नथ पेयर करी है और ये चूड़ा इसमें राजस्थानी है, राजस्थानी चूड़ा है इसमें, लाख का, जिसे लाख का बोलते हैं, वो इसमें ऐड है. आप देख सकते हैं साड़ी. Thank you so much. I would request another beautiful Nari Kirti ma'am to comment upon this performance. थैंक यू. और एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी. सुनाए? छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, नन्ही सी प्यारी सी भोली सी आई कोई परी, पालने में तू ऐसे झूलती रहे, गाते मुस्कुराते परी की था. तो थैंक यू सो मच. तो गाना इतना नहीं आता. ये देखिए. हाय आरती, कैसे हो? नमस्कार मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका इतना अच्छा मेकअप और ये ब्यूटीफुल नारी वाला कॉन्सेप्ट देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ. आई एम सुपर इंस्पायर्ड फॉर टुमारोज करवा चौथ नाउ. Yes, I'm going to take inspiration from each one of you. Ma'am, I'm not married. Okay, I know you're not married, but I am married. That's why I'm taking inspiration from you. Ma'am, आपको happy करवा चौथ. Thank you so much. But ये beautiful नारी का मुझे concept बहुत ही interesting लगा. आपने काफी मेहनत की है, पूरा carpet बिछाया है वहाँ पे, थोड़ा सा ramp walk भी करके दिखाया. And आपका जो आई मेकअप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. You put in साड़ी से अकॉर्डिंग. बिल्कुल साड़ी से बिल्कुल मैच कर रहा है. बिल्कुल आपने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग ही मेकअप किया है. So you are looking lovely. Your sari, as you say, sari is the most beautiful Indian attire a woman can wear, and you are looking extremely beautiful. थोड़ा सा presentation पे हम और काम कर सकते थे आरती, क्योंकि 90 seconds का टाइम हमारे पास होता है.
तो स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बीच में हमें किस कंटेंट पे कंसंट्रेट करना है, वो प्रेजेंटेशन। मैम उतनी तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, मॉर्निंग में ही आई हूँ। कोई बात नहीं, जब हमें तैयारी करनी होती है तो हम कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तो लगता ही नहीं ना, 90 सेकेंड्स ही थे। लेकिन अदरवाइज आपने बहुत अच्छा किया आरती, आपने जो मेकअप किया है, जो आपने बैकग्राउंड में और नीचे जो आपने कार्पेट की प्रेपरेशन में जो मेहनत की है, वो मुझे बहुत पसंद आई। जस्ट दैट प्रेजेंटेशन पे नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Same here, Aarti, same here. Thank you, Aarti. Next, we have Payal Jaiswal, and post her, the sequence would be Prabhati Das, Prajna, Ravinder Kaur, Neha Bharwase, Bhagyashree, Suhani Mitra, and Harpreet Kaur. Hi, Payal. Hello, ma'am. Hello, Harry. Hello, everyone. I am good. How are you? I am great. Okay, go ahead. All the best. Thank you. मेरा आज का लुक है गौरी और काली, क्योंकि एक औरत के अंदर गौरी का रूप भी होता है और काली का रूप भी होता है। जब उसकी इज्जत पे बात आती है या फिर उसके परिवार पे बात आती है तो वो काली का रूप भी धारण कर लेती है। एक इंस्पिरेशन एक लड़की के लिए दुर्गा माँ, काली माँ, उससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, गौरी भी है। इसलिए मैंने आज ये लुक कैरी किया है। मेरी जो साड़ी है वो ताती साड़ी है, बंगाली ताती साड़ी है। दिस इज माय मॉम्स ज्वेलरी, और मैंने चूड़ा कैरी किया है। एंड दिस इज माय काली रूप, एंड दिस साइड इट इज माय गौरी रूप। मैंने थर्ड आई बनाई है, वो कुमकुम से बनाई है। मैंने ये पूरा आई शेडो से क्रिएट किया है, ये लिपस्टिक्स है। और this is my look. I'll show you my whole look. This is a tati sari. I have carried the chuda because Kali Ma और गौरी माँ को चूड़ा चढ़ता है। And this is the nut. Proper मैंने Indian गौरी माँ और काली माँ का look carry किया है। I am really inspired by them because मैं खुद एक लड़की हूँ और हर लड़की को गौरी और काली दोनों का रूप अपने अंदर रखना चाहिए। Thank you. This is from my side. Thank you, Payal. Thank you so much. I would request Smita to comment upon it. Hello, Payal. Hi, ma'am. Bold and beautiful. Thank you, ma'am. So definitely काली का आपने जो मेकअप किया है बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा ये क्या है कि आई शेडो के साथ आपने यूज करके और बहुत अच्छा लग रहा है। And definitely this is the world famous Bengali sari that we call. Yes, ma'am, tati sari. हाँ, and वो भी बहुत appropriate color भी use किया है आपने, so it's really good. And good luck for your next round also. Thank you, ma'am. My all rounds are complete. Only this was remaining. Okay. So best of luck. Thank you, ma'am. Thank you so much. And next we have Prabhati Das. Hi, Prabhati. हाय मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। Okay, go ahead. All the best. मैम नमस्ते, मैं प्रभाती दास। मैं आज दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिल्ली जैसा कि हम जानते ही हैं ये इंडिया का कैपिटल है, और दिल्ली का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आर्ट एंड क्राफ्ट से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको एंशिएंट की चीजें प्लस मॉडर्नाइजेशन दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सारे रिचुअल्स, फेस्टिवल्स इंडिया के जितने भी स्टेट के हैं सब फॉलो किए जाते हैं, इसलिए शायद दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट लुक। मैम इसमें मैंने इंडिया को मतलब दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें ये जो एम्ब्रॉयडरी की गई है इसे जंगला एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, जो कि बिल्कुल एंशिएंट टाइम का है।
और सेम इस दिल्ली की इंस्पिरेशन चीज है कि एंशियंट कम स्टाइलिश लुक, और इसमें मैंने एक मोनोक्रोमेटिक मेकअप लिया है, और इसके जो इयररिंग्स हैं ये भी बिल्कुल अर्बनाइजेशन और एंशियंट को डिफाइन कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि दिल्ली का जो कल्चर है वो सारे स्टेट से इंस्पायर है, इसीलिए शायद इसको मिनी इंडिया भी कहते हैं। और इंडिया के जितने भी लोग हैं सब दिल्ली में हैं, और सबकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, यहाँ पे किसी को लगता ही नहीं है कि कोई अलग अलग स्टेट से, यहाँ पे सबको अपनापन ही फील होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, Prabhati. Thank you so much. And next we have Prajna. Also, I would request Kirti ma'am to comment upon your performance. Also, hi Jaya. Hi Prabhati, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आज मैं परफेक्ट हूँ बिल्कुल। बिल्कुल। Okay, first of all, let me just compliment you on your voice. Your voice is very sensuous. मतलब आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, you're so calm, and जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं ना, ऐसे मन करता है सुनते ही रहो, सुनते ही रहो. So you just have that kind of voice, lovely voice. So I certainly wanted to listen to more of, what you were talking about Delhi. Certainly what you have said makes sense. Delhi is the capital of our country, and, people from different cultures and different cities, all, they're coming to Delhi and settling there. So it is a mix of all cultures there, but I just, the way you talked, okay, it was good. But I was a little confused. आपने attire choose किया है. How does it signify Delhi? Right? ये इस पे जो जंगला वर्क है, okay fine. But ये जो आपने overall attire choose किया है या आपने जो makeup choose किया है, तो उसको आप और अच्छे तरीके से explain कर सकते थे that why this and why Delhi and what is the connection between the two. Okay. Right? But overall performance, as I say, I loved it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Prabhati. Next we have Prajna. Hi, Prajna. Hello, ma'am. How are you? Ma'am, I'm fine. How are you? I am good too. And are we ready? Performance शुरू करें? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. Thank you. Good evening, everyone. Today I wear this white salwar with very simple makeup. The purpose of choosing white, because I want to speak about the significance of the color white. As we all know, India is a country of various culture and various religion. But we know that white color, which is of purity, brotherhood, and harmony. So this white color always remind everyone that to maintain the space and live in the harmony. But nowadays, some social workers, some social and anti-social makers that break our social fabric of our great nation by dividing us in various cases like our caste or color or religion. So everyone that stand with the people in grief and provide strength to the people for brotherhood, so that no other forces can harm our country, the true idea of our country. Last but not the least, that COVID-19 has not yet. So we together, if we are together, then we can fight this virus. So thank you. Thank you, Prajna. Thank you so much. I would request Smita to comment upon your performance. Hi, Prajna. Definitely, white is a very pure and powerful color. And जिस तरह से आपने explain किया उसे, it was really nice. अपने बारे में भी आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा और confidence के साथ continuous eye contact कीजिए. काफी बार आप कभी कोई words सोच रहे थे, so शायद थोड़ा सा preparation और अगर अच्छे से होता तो ये problem नहीं आती. Right? So आगे के round में इन सारे points पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. And good luck. Thank you, Prajna. Next we have Ravinder Kaur. Hi, Ravinder. Hi, Hari. Hello, everyone. Are we ready? My name is, yeah. Go ahead, all the best. So,
Hi, my name is Ravinder Kaur, and I'm a finance and accounting professional. Today, I'm from Delhi, and today I'm representing Punjab. So I have chosen these bright colors as it is, very important part in all of the functions, in many of the functions. And today I'm wearing this fulkari, which is one of the main, part of the Punjabi attire. I'm wearing this tikka. I have chosen my, bright color lipstick and also a necklace. So today I would be performing on one of the songs as well. To see my entire attire. So I have worn the Sharara suit. And a fulkari. Let me begin with the performance. Thank you all. Thank you, Ravinder. Thank you so much. You remember Ravinder was 15 seconds faster scheduled time, and I would request Neeti ma'am to comment upon her performance. Hi, Ravinder. How are you? I'm good. How are you, ma'am? Even I'm good. Thank you. And you're looking lovely in this fulkari. आपका जूली भी बहुत अच्छा लग रहा है, रविंदर. And overall, जो आपने song choose किया, that's one of my favorite songs, Long Sumay Lachiyan. So इसलिए मुझे आपका performance वैसे भी बहुत अच्छा लगा. But थोड़ा सा आप अगर preparation पे और ध्यान देते ना रविंदर, तो पहली ही बात तो ये आपका time exceed नहीं होता. You exceeded by 15 seconds. Right, and when you were done with your introduction and you were moving on to your dance performance, तो उसके बीच में भी कुछ gap था. You were a little confused. I don't know, maybe you were waiting for someone to play the song, or you were yourself going to do it. तो वो part होता है preparation का. Right, if you practice it beforehand, आप पहले 2-3 बार अगर practice कर लेते हो that okay, this is my introduction, very crisp and clear. Although मुझे ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा और बात कर सकते थे पंजाब के बारे में, पंजाबी कल्चर के बारे में. तो क्या होता है जब आपकी एनर्जी हाई होती है ना, तो आप थोड़ा उस फ्लो में जल्दी वो चीजें बताते, क्योंकि 90 सेकंड्स में आप जितना ज्यादा कंटेंट और जितना क्रिएटिवली उसको पुट अक्रॉस हमारे सामने दे सकते हो, वो मैटर करता है. Yes, क्योंकि पंजाब के बारे में बहुत सारे लोगों ने आज बोला है, one or two more girls, they have done that. लेकिन आप कितना creatively उसको present करते हो, that matters, right? So next time, say I would want, because you are capable of doing much better than this, so I would be looking forward to a more, well prepared presentation from your side. Sure. Thank you. Thank you, Ravinder. Next, we have Neha Bharwase, and then Bhagyashree, Sohani Mitra, and Harpreet Kaur. Hi, Neha. नमस्ते, मेरा नाम नेहा है. आज मैंने प्लेन ब्लैक कुर्ती पहनी है विद बेज लेगिंग. काफी डुअल लुक क्रिएट करने की कोशिश की है. और आज इस शुभ अवसर पर मैं एक सॉन्ग पेश करना चाहूंगी आप सभी के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आए.
Thank you, Neha. मेरा विषय है नारी, कभी माँ तो बेटी बनकर बुलाती है. Am I audible? Yes, Neha, you done? Just a minute. मेरा विषय है नारी, कभी माँ तो बेटी बनकर दुलारती है, महिला न जाने कितने जीवन संवारती है. धन्यवाद. Thank you so much, Neha. Jury members, Neha was 15 seconds past her scheduled time, and I would request Smita to comment upon her performance. Hello, Neha. Hello, ma'am. Good evening. आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं आ पाया. वन, शायद आपके वहाँ पे नेटवर्क इशू है. सेकेंडली, द सॉन्ग वाज नॉट ऑडिबल. So what we were able to see was only your dance steps, or the reason why you have selected this dress or this color, वो भी बहुत clearly नहीं आ पाया. So next time try to rehearse कि जब आप music play कर रहे हो तो वो सुनाई दे रहा है नहीं. Try to have that एक trial Zoom session करो अपने friends के साथ, so that ये सारे glitches नहीं आए आपके साथ और आप आपके point बहुत clearly बता पाए. Correct, ma'am. Yes. I have been rehearsing since last night, and because I guess of the network issue, it wasn't that audible, and I am sorry for that. Yeah, not an issue, but take care of all these things in the next round. Good luck for that. Thank you. Thank you, Neha. Next we have Bhagyashree. Hi, Bhagyashree. Hello, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. Thank you. So my name is Bhagyashree Thapre. I'm 21 years old. I'm from Nandurbar, Maharashtra. So as I'm from Maharashtra, I have chosen a Marathi look. So this sari is called Ashti Nawari. So I have done Joda with my hairs, and I have also put Gajra. I have put on a Chandra Bindi. And this necklace is called a Thashi, and I have a Kambar Patta on my waist. So that's it. This is my look. Thank you. Thank you, Bhagyashree. Thank you so much. I would request Kirti ma'am to comment upon your performance. Hi, Bhagyashree. कैसे हो? I'm good, ma'am. How are you? आप गुड नहीं लग रहे हो. आप इतने नर्वस क्यों हो? मुझे ये बताओ. कितने टाइम में आपने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की है? What was the time she took? 40 seconds? 40 seconds, yeah. Okay, आपके पास 90 seconds का टाइम था, भाग्यश्री, लेकिन आप इतने नर्वस थे कि आपने बस जल्दी दिखाया. एंड ट्रस्ट मी, you're looking like a doll. You're looking like a छोटी सी क्यूट सी मराठी दुल्हन. Yes, you're looking very cute. आप बहुत कुछ इसमें बोल सकते थे, डांस करके दिखा सकते थे मराठी. So you had so many options, लेकिन आपने उसको जल्दी से खत्म कर दिया. नर्वस नहीं होना है भाग्यश्री. नर्वसनेस से आपकी सारी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है. राइट, आज तो आपने एंगल भी सही चूज किया है, लाइट भी बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, सब कुछ परफेक्ट है. यस, ओनली योर प्रिपरेशन वाज नॉट डन प्रॉपर्ली. Yes, ma'am. राइट, टैलेंट राउंड 3 के लिए अभी से प्रिपेयर करने लग जाओ. आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सो दैट यू डू नॉट थिंक कि मुझे टाइम नहीं मिला. या It was my last round. I have done talent round. You've already done talent round 3. Yes. Oh, okay. But आज मैं आपसे और बहुत ज़्यादा expect कर रही थी भाग्यश्री, but never mind. Your makeup is looking nice, your gajra is looking nice, and your sari is also looking very nice. All the best. Thank you. Thank you, Bhagyashree. Next we have Suhani Mitra. Hi, Suhani. Hello, ma'am. How are you? Fine. How are you? I am good. Are we ready? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. Thank you, ma'am.
गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुहानी मित्रा। तो आज मैंने ये बंगाली पूरा गेटअप में रेडी हुआ है, बंगाली ट्रेडिशन मैंने चूज किया आप सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम बंगाली एंड आई लव माय ट्रेडिशन, दैट्स व्हाई। सो आई एम शोइंग यू। ये मैंने बंगाली पैटर्न में साड़ी पहनी है। हियर आई हैव ज्वेलरी ऑफ ऑल गोल्डन। दिस आर माय बैंगल्स, इट्स माय इयररिंग एंड आई हैड अप्लाइड अ लाइनर। थोड़ा सा मैंने ब्रॉड करने का कोशिश किया सो दैट माय आईज कैन लुक मोर एंड मोर बिगर। मैंने बड़ी सी रेड बिंदी भी लगाई है जैसे बंगाली लगाते हैं। सेम आई एम डूइंग विथ रेड डार्क लिपस्टिक। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you, Suhani. Thank you so much. And I would request Smita to comment upon your performance. Now here comes my Bengali. Okay. So Suhani, sabki choy khub bhalo. Yes, everything was good, but Dhanuchi dance needs so much of energy that was missing. Oh. Right? Okay, from next time I will remember. Yeah, so when you're presenting some state, then that energy, that passion has to be there. Right? Otherwise, your sari is perfect, your makeup, everything is good. Thank you, ma'am. And you have explained also very well, but put more energy into it. Dance. Okay, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you. Best of luck. Thank you, Suhani. And the last contestant for the day is Harpreet. Hi, Harpreet. Hello, ma'am. Harpreet, आपका video off है. Yeah, now I can see you. Are you ready? Yes, ma'am. Go ahead. All the best. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਫੇਮਸ ਚੁੰਨੀ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ने शेयर करा कि फुलकारी बट किसी ने ये चीज नहीं बोली कि जो हम आज के टाइम पे फुलकारी पहनते हैं शायद वो पहले टाइम पे थी या नहीं थी, वैसी थी जो आज जो हम लोग फुलकारी वेयर करते हैं वो एक्चुअली मशीन से बनी हुई है। बट आज मैंने मेरी दादी की फुलकारी ली है जो शायद आई थिंक सो कि उनकी मदर ने उनको बनाकर उनकी शादी के टाइम पे दी थी। सो मैं आज फुलकारी के बारे में बताऊंगी सबको कि हाँ आज सब गर्ल्स फुलकारी वेयर करती हैं बट स्टिल फुलकारी लेना या उसको वेयर करना वो चीज पंजाबी कुड़ी नहीं है। पंजाबी कुड़ी वो होती हैं जिनको पूरा प्रॉपर उसको वेयरेंस करने में होता है। लाइक मैं अपना कुछ पर्सनली शेयर करती हूँ कि मेरा जो ग्रुप था उसमें मतलब मुझे काफी वो फील कराया जाता था कि अगर मैं उनके साथ कभी जाती हूँ तो मैं सूट वेयर करती थी तो मुझे ये चीज बोली जाती थी कि वाओ कि तू सूट क्यों पहनती है। तो मैं उन लोगों को भी ये चीज बताना चाहती हूँ कि मैं सूट इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मैं एक पंजाबी कुड़ी हूँ। आई लव टू वेयर सूट क्योंकि आज के टाइम पे शायद जहाँ लड़कियां ये चीज सोचती हैं कि वो वेस्टर्न या दूसरी वे में सुंदर दिखती हैं बट स्टिल पंजाबी सूट में भी लड़की उतनी ही सुंदर लगती है जितनी वेस्टर्न या किसी भी और कल्चर के वे में रेडी होती है। और हाँ शायद मैम ने आई थिंक जो कलसी मैम ने पटाखा या किसी और ने बोला था बट प्लीज सिर्फ पटाखा दिखने के लिए मत पहनिए। अपने आप को बताइए कि हाँ सिर्फ शो करने के लिए नहीं कि लड़के पटाखा बोलते हैं तो वो पटाखा या जो भी है, नहीं अपने आप को दिखाइए कि आप सूट में भी एकदम अच्छे दिख सकते हैं। फिर लाइक आई शो यू माई मतलब ये मेरी ग्रैंड मदर की चुन्नी है फुलकारी जो उनकी मदर ने अपने हाथों से बनाई हुई है। और इसको हम लोग हिंदी में झुमका बोलते हैं बट इन पंजाबी लैंग्वेज इट्स कोंटे। हमारे दादी के टाइम पे इनको कोंटे बोला जाता था एंड विद डार्क मेकअप क्योंकि कोई भी कुड़ी है कोई भी गर्ल है
वो मेकअप के साथ भी अच्छी लगती है, बट विदाउट मेकअप भी अच्छी लगती है, बट स्टिल कि मतलब आज के टाइम पे मेकअप को थोड़ा ज्यादा वो करते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू मैम. Thank you, Harpreet. Thank you so much. Jury members, Harpreet was 1 minute 30 seconds past our scheduled time, and I would request Smita to comment upon your performance. Kirti ma'am is a bit occupied. हेलो. हाय मैम. हरप्रीत, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू मैम. बट जैसे कि आप आपका भी एक्सप्लेन कर रहे थे बाकियों के पॉइंट, शायद उस वजह से आपके पॉइंट एक्सीड भी हो गए, आपका जो टाइम था. जी 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 मैम. अपने थोड़े से टाइम पे आपका जो भी आपको बोलना है वो फिक्स रखिए. जी मैम. जी. राइट. ये आपका राउंड है, जी आपको आपके बारे में प्रेजेंट करना है. जी. राइट. जी. तो जी. सीमित रखिए कि आपने जो प्रिपेयर करके आए हैं उसी को आप वहां पे बता रहे हैं, ताकि जी. आप जो 1 मिनट आपका एक्सीड हो गया है वो नहीं होगा. ओके मैम. राइट. बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था. थैंक यू मैम. Thank you, Harpreet. Thank you so much. Us to the end. Thank you so much, ladies. Thank you so much for putting up such a wonderful show. I would request all of you to start your videos back so that the jury members can interact and look up to you all. And now, of course, let's hear it from the jury themselves about their final insight words. I would request Smita to start. Yes. Definitely this was a very good performance wise. लेकिन खाली कुछ एक चीज जो आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए शायद हेल्पफुल रहे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए. अभी दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू बी मिसेस इंडिया एंड मिस इंडिया. आप अभी भी वो एक झिझक, देयर इज स्टिल दैट फियर, एंजाइटी, नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, वो दिख रहा है. स्टिल some of the performance में we have not seen practice. अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं it shows that you are not serious about it, right? Some of you have done बहुत अच्छा. They have experimented, they have tried something different, और वही हमें करना है. They have tried different but they have not left themselves. खुद का कॉन्सेप्ट एक उन्होंने लाया है, बट विथ कॉन्फिडेंस. और वो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट सीरियस, एंड व्हेन यू स्टिल रिमेंबर द एम एंड गोल दैट यू हैव, कि आप आए क्यों हो इस प्लेटफॉर्म पे. कहीं ना कहीं कुछ एक जोनों में हम वी फेल्ट कि आप भूल गए हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू पार्टिसिपेट हियर. So don't forget that aim. Don't forget the reason. Right? You have come here to achieve something, and that will come only with practice. And then the sky is the limit. So very best of luck to each one of you. जिसका हो गया है, good luck. और जिसका थर्ड राउंड बाकी है, प्लीज ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, एम को याद कीजिएगा, मिरर के सामने खड़े रह के बोलिएगा कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम द विनर. वो फिर स्टेज पे विनर कोई भी हो, ईच वन ऑफ यू शुड बी अ विनर फ्रॉम योर इनसाइड. ठीक है, बाहर का तो बाद में हम लोग देखेंगे 19 को, बट राइट नाउ ईच वन ऑफ यू आर अ विनर. राइट? सो गुड लक. Thank you so much, Smita. Thank you. I think Chaya is still facing some network issue, so we can wind this up. Thank you so much, Smita. Thank you for being here. Thank you, Chaya, for being here with us. It was, a pleasure having all of you on board. I shall take your leave, and I will just have some parting words with the participants. Sure. Thank you.